Hi everyone, good evening and welcome to the class everybody. Good evening everyone. Let me know if you people can hear me and see me properly. Quickly everybody, I want all of you to tell me if you can hear me and see me properly. Good evening everybody, I hope you people can see me. Good evening Prabjot, good evening Janvi, good evening everybody. Alright, cool. So let's start with our session without wasting any of our precious time. Okay, so I'm going to give you some top tips for IELTS listening. And how am I going to give you those tips? Let's check out. Alright, can I start? Everybody? Alright. So I hope everybody can now see questions 1 to 5. And the title says predict answers. Am I right? So how many questions can you see? There are 5 questions. Alright. So what is the situation and who are the two people talking? So आपको सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि इस कॉन्वर्सेशन में कौन से दो लोग इन्वॉल्व होंगे. राइट? गुड इवनिंग जीबी. ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे प्रिडिक्ट करके बताना है कि ये कॉन्वर्सेशन जो होने वाली है, it's going to take place between which two people. Just by reading the notes you have to tell me. Hi Arman, good evening. So you just have to tell me. Hi Manish, you just have to tell me कि ये कॉन्वर्सेशन किन दो लोगों के बीच में होने वाली है. गुड इवनिंग मीत. ओके, प्रभजोत सेज किसी ट्यूटोरियल के बारे में है. ठीक है, दैट्स फाइन, बट आई एम आस्किंग यू कि ये जो कॉन्वर्सेशन होगी ये किन दो लोगों के बीच में होने वाली है. वन इज स्टूडेंट फॉर श्योर. एक तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम आपको गिवन है. गुड इवनिंग अनिकेत, जेम्स हिलरी. बट सेकेंड पर्सन कौन है यहाँ पे? हाय रोहन, आई एम आस्किंग यू कि ठीक है ये कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में है, बट हु आर दोज टू पीपल? वन वी ऑलरेडी नो दैट ही इज अ स्टूडेंट, बट व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अदर स्पीकर? करेक्ट, एब्सोल्युटली, बैंग ऑन. तो ये जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में होगी. राइट, एब्सोल्युटली. अब आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं. राइट एवरीबडी? तो सबसे पहले आपने ये प्रिडिक्ट करना है. प्रिडिक्ट क्या करना है कि कौन से ब्लैंक में किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, सो दैट हम अपने ईयर्स को उसी तरह से ट्रेन करेंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहले इफ यू लुक एट दिस वन और आपके पास ऑप्शंस हैं ये, सो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी? एडवाइस अबाउट डैश. क्या यहाँ पे कोई डेट जाएगी, कोई टाइम जाएगा, नेम, प्लेस या टॉपिक? व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट. सो मतलब यहाँ पे जो आपको ब्लैंक में चाहिए होगा इट विल बी अ टॉपिक. राइट, उसके बाद सेकंड देखो, अटेंड टॉक विद डैश. अटेंड टॉक विद डैश. सेकंड नेम होगा एब्सोल्युटली. ठीक है, ओके. ट्यूसडे एट डैश. अब यहां पे बताइए, इट वुड बी व्हाट? थर्ड के लिए क्लास. करेक्ट, यू विल नीड अ टाइम फॉर दिस. उसके बाद इफ यू लुक एट द फोर्थ वन, इट सेज अरेंज मीटिंग एट डैश. Good evening everybody. Yes, absolutely. So arrange meeting at, that will be maybe a place, maybe at McDonald's, maybe at Domino's, we don't know.
Next tutorial dash at 10:30 a.m. Absolutely, here you will need a date, right? हाँ, Zoom पे भी हो सकती है, absolutely. अब अगर मैं इनके आपको एक्चुअल आंसर्स दे दूं तो क्या आप मुझे मैच करके बता सकते हो? So let's talk about the first one. Advice about. Exams, exactly. What about second one? Attend talk with, good evening Abhiru. Attend talk with dash. You need to, okay, very good, Dr. George. Okay, what about third one? Attend talk with Dr. George Tuesday at 4:15 p.m. exactly. Arrange meeting at dash. Arrange meeting at 4th 1 class. Arrange meeting at, exactly, student services. Maybe, yes. Next tutorial dash at 10:30 a.m. That will be 29 April, I guess. Okay, अब आप मुझे बताओ कि क्या ये बहुत ज़रूरी नहीं होता टू प्रिडिक्ट, क्योंकि जब आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि कौन से ब्लैंक में किस तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी, यू कैन देन ट्रेन योर ईयर्स टू लिसन फॉर दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ऑब्वियसली आपका आंसर पूरी ऑडियो में नहीं है, it's only in a specific part of the sentence that the speaker will say, right? हमारे लिए पूरी की पूरी ऑडियो यूजफुल नहीं होती, right? We don't want to gain mastery, but all we want is to answer 40 questions during that time, right? अब मेरे हिसाब से जो पार्ट आइल्स के लिसनिंग में टफ होता है वो कौन सा होता है? What do you think? Which part in IELTS listening do you think is the most challenging? Is it part 1, part 2, part 3 or part 4? आपके लिए कौन सा पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? Then I will tell you कि yes, exactly. I will say कि part 4 उतना टफ नहीं होता जितना comparatively थर्ड वाला होता है ना? Okay. अब होता क्या है यहाँ पे? पार्ट 3 में आप लोगों को मल्टीपल स्पीकर्स मिलते हैं और वो सारे स्पीकर्स एक एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, है ना? एग्जैक्टली करेक्ट. अब करना क्या पड़ता है यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन चाहिए. बट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें उन तीनों या चारों स्पीकर्स के बीच जो डिस्कशन हो रहा है वो बहुत क्लियरली फॉलो करना पड़ता है. वो कौन से फैक्ट्स बता रहे हैं, कौन से रीजंस दे रहे हैं, या कौन से वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट? उनके क्या व्यूज हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं, वी नीड टू फिगर देम आउट. ठीक है, अब एक एक्सरसाइज करेंगे, देन वी विल गेट टू नो. ठीक है, अब बात क्या है कि ठीक है, अब 3 स्पीकर्स या 4 स्पीकर्स जब आपस में बात करेंगे वो एक दूसरे को कुछ बताएंगे. दैट्स फर्स्ट सिनेरियो. या तो वो एक दूसरे को कुछ बताएंगे, दे विल टेल समथिंग, ईदर दे आर गोइंग टू आस्क, राइट, और आफ्टर हैविंग द कॉन्वर्जेशन दे आर गोइंग टू डिसाइड कि उनका मेन पॉइंट क्या था. मानते हो? यस और नो? क्विकली. कॉन्वर्जेशन सिर्फ एक तरफा बातचीत नहीं होती, राइट? इट्स नॉट वन वे कम्युनिकेशन, तभी उसको कॉन्वर्सेशन बोला जाता है. कॉन्वर्सेशन में स्पीकर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें पूछते हैं, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज शेयर करते हैं, राइट?
अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो अपने ओपिनियंस को दूसरे वर्ड्स में कैसे रिफ्रेज करते हैं. अब एक एक्सरसाइज करते हैं, फ्यू पीपल आर रेडी. ठीक है, मैं आपको एक कॉन्वर्जेशन दिखाऊंगा. ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. Student says, are there any areas of my work that you think I could improve? Okay. अब इसका जवाब वो किससे एक्सपेक्ट करता होगा? What do you think is the next speaker going to be? अब इसका आंसर कौन देगा? सेकेंड स्पीकर कौन होने वाला है? कैन यू टेल मी? टीचर. एग्जैक्टली. अब टीचर ने बोला, well, your work's been pretty good this term. I like the way you set out your data. You could perhaps learn a bit more about the topic. That's the only thing. But you obviously pay attention in lectures. अब आप मुझे बता सकते हो कि क्या आंसर पूरे डायलॉग में था या इट वॉज देयर इन अ स्पेसिफिक सेंटेंस? ये पार्ट पढ़ो and tell me where exactly does the tutor give the answer. उसने बोला, I like the way you set out your data, your work has been pretty good this term, you pay attention in lectures, but the student is asking, are there any areas of my work that you think I could improve? It's in the last line, is it? Okay, exactly. Now let's answer the question. The student needs to work on his concentration, presentation skills, subject knowledge. Are you sure? Dialogue आपके सामने है क्लास. I'm not expecting you to give me wrong answers. मैंने तो ट्रांसक्रिप्ट भी दे दिया आपको, but still you guys have not been able to figure out. क्या कंसंट्रेशन पे काम करने की जरूरत है उसको? No. Class, see here बेटा, everybody. टीचर ने क्या बोला? You could learn a bit more about the topic. That's the only thing. तो आंसर क्या होना चाहिए था? आंसर शुड बी सी. उसको सब्जेक्ट नॉलेज पे काम करने की जरूरत है. राइट एवरीबडी? एग्जैक्टली. चलें आगे. डन. ओके. उसके बाद एक और कॉन्वर्जेशन हम पढ़ते हैं. ठीक है, ओके. अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है, oh hi, I can't find Mr. Gurpreet, is he on a holiday? Okay, then the administrator says, actually he's just come back from 2 weeks study leave, but he is not here today. He seems to have developed a nasty cold. Try joining his 7 o'clock class tomorrow. He should be back by then. Okay, now the question is, Mr. Gurpreet is unavailable because he is off sick, on study leave, or he's teaching another class. Very good. Yes. स्टडी लीव से तो वो वापस आ चुके हैं. राइट एग्जैक्टली. राइट. चलो, अब मैं आपको कुछ एक्सचेंज दिखाऊंगा कॉन्वर्जेशंस के, और आपको मुझे बताना है क्या स्पीकर्स आपस में एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं. करें स्टार्ट. जस्ट टाइप यस क्विकली. करें स्टार्ट.
मैं आपको कुछ एक्सचेंजेस दिखाऊंगा पार्ट 3 के, और आपको बस मुझे ये बताना है कि वो एग्री कर रहे हैं आपस में या डिसएग्री कर रहे हैं, राइट? चलो, ओके। अब स्पीकर 1 सेज a camel's hump contains water so that it can go without drinking for many days, doesn't it? Okay. So speaker 1 का मतलब क्या है? He says कि कैमल की हम्प में इतना पानी होता है कि वो बहुत दिन तक बिना पानी पिए भी सर्वाइव कर सकता है। अब स्पीकर 2 says I'm not so sure, I think it's made of fat which can be converted to energy and water, but I don't think it actually contains water. So is it agreement or disagreement between the speakers? What do you think? Are the speakers agreeing with each other, or do they disagree, or are they neutral? Yes, exactly. Class identified? Okay, next पे चलते हैं. Yes. अब speaker 1 says it's awful when people throw rubbish and cigarette butts in the street and just expect someone else to clean it up. It's really so lazy. Speaker 2 says you have a point. It is lazy of them. But if we had more public rubbish bins, that might be helpful too. Now, hi Talat, good evening. So speaker 2 says, you have a point, it is lazy of them. But if we had more public rubbish bins, that might be of help too. Agreement है, but एक suggestion भी आया है. Right? Did you hear it? यहाँ पे उसने एक suggestion भी दिया कि अगर हमारे पास ज़्यादा public rubbish bins होंगे ना, तो वो भी थोड़ी सी help कर सकते हैं. Right? चलो. Okay. अब third conversation में क्या हो रहा है? Speaker 1 says, if you want to lose weight, you should cut out fats and carbohydrates. Cut out का मतलब होता है कम करना, reduce करना. If you want to lose weight, you should cut out fats and carbohydrates, things like potatoes, rice, pasta, and just eat meat and vegetables. That's all very well, but it's not very healthy. You need carbohydrates to give you energy. Personally, I think it is better to have a balanced diet. So, are the speakers agreeing with each other, or do they disagree with each other? What do you think? What do you think? Yes. Yes. इसी बात पे लाइक कर दो क्लास वीडियो को, एवरीबडी, अगर नहीं किया है तो. ओके, आगे चले. अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट? अब वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? क्या रियली आइल्स की लिसनिंग आपके लिए वो उतनी ही इजी करेंगे? No, it's not easy to score a band 9 in IELTS listening, right? अब आएंगे आप लोगों के लिए distractors. Distractors का काम क्या होता है? What do you understand by a distractor? अब जैसे मोबाइल फोन is a distractor, right? अब मोबाइल फोन हमारे लिए डिस्ट्रैक्टर होता है. क्या होता है डिस्ट्रैक्टर? जो हमें डेविएट कर दे हमारे एक्चुअल गोल से, राइट? ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्ट्रैक्टर्स की, ध्यान से सुनना, राइट? अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब आइल्स की लिसनिंग होती है ना, तो जनरली ज्यादातर इंफॉर्मेशन स्पीकर्स रिपीट करते हैं, और जब वो रिपीट करते हैं तो वो यूजुअली डिफरेंट वर्ड्स के साथ करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये बोलना है स्टडिंग ओवरसीज विल नॉट बी चीप, अब्रॉड जाके पढ़ना उतना चीप नहीं होगा. मैं ये भी तो बोल सकता हूं दैट इट कैन बी एक्सपेंसिव. सो अब देखो, फर्स्ट लाइन में स्टडिंग ओवरसीज विल नॉट बी चीप, स्पीकर ने आगे रिपीट कर दिया इट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेज ऑफ गेटिंग क्वालिफिकेशंस. दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है क्लास? एग्री? मुझे बताओ सेम है या नहीं? जिनको सेम लगता है वो सेम लिखो क्विकली.
अब आप लोग बोलोगे सर कुछ नहीं हुआ, बस स्पीकर ने उसके बाद जाके इंफॉर्मेशन को रिपीट कर दिया। यस एग्जैक्टली। अब जब डायलॉग्स होते हैं तब इंफॉर्मेशन कैसे रिपीट होती है? जब डायलॉग्स होते हैं मतलब कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो इंफॉर्मेशन यूजुअली दूसरा स्पीकर रिपीट करता है। मैंने कुछ बोला, अब जैसे मैंने बोला स्टडिंग ओवरसीज विल नॉट बी चीप, तो स्पीकर 2 बोलेगा डू यू थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेज? तो आइडियली क्या हुआ, स्पीकर 2 ने भी वही बात बोली जो मैंने बोली थी, राइट? तो ये एक टाइप का डिस्ट्रैक्टर होता है जब आपको इंफॉर्मेशन रिपीट मिलती है, सेम मिलती है, बट दैट टू इन अ डिफरेंट वर्जन। समझ में आई एवरीबडी? चलो आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूं, मुझे बताना कौन सी इंफॉर्मेशन रिपीट हुई है स्क्रिप्ट में। फाइन, चलो पढ़ते हैं। अब Carla says when you get inside, go straight down the corridor to the far end and turn left. You will see 3 doors on your left. Accommodation is the middle one. अब कीको ने क्या बोला? So I go along the corridor, turn left, and it's the second door on the left. अब मुझे बता सकते हो कौन सी इंफॉर्मेशन रिपीट हुई है और किसने की है वो इंफॉर्मेशन रिपीट? तो डोंट यू थिंक कीको ने भी वही बोला जो कार्ला ने उसको डायरेक्शन दिए थे? गो स्ट्रेट डाउन द कॉरिडोर, उसने बोला गो अलोंग द कॉरिडोर। टर्न लेफ्ट, इट्स द सेकेंड डोर ऑन द लेफ्ट, उसने भी यही बोला था। अकोमोडेशन कौन सा है? मिडल वाला, राइट? 3 doors on your left, accommodation is the middle one. Yes? High five, give me a high five if you have understood this. मैंने देखो आपको एक एग्जाम्पल के साथ करवाया। Give me a high five. Great, absolutely, yes. Yeah, okay, let's move on. अब सेकेंड टिप जो मैं आप लोग को देना चाह रहा हूं, that is you should never try to understand everything in the audio. Agree? How many of you agree? मैं ये बोल रहा हूँ कि don't try to understand everything in the audio, और यही चीज मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी अभी करवाई थी। All we want is to answer questions. हमें we want to be selective in hearing. अब selective in hearing का मतलब जो पूछा है बस उसी के लिए सुनना है। अगर बाकी चीजों के लिए सुनोगे तो आप डेविएट हो जाओगे, राइट? You want to listen what we want to listen. ठीक है? Right, absolutely. The aim in IELTS for listening and reading is to find answers to questions. Am I right? हमारा एम क्या होता है? लिसनिंग में और रीडिंग में हमारा एम होता है कि हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, दैट्स इट। हमें उस पैसेज की मास्टरी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू बिकम अ प्रो। ऑल वी वांट इज, हमारा टारगेट है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सही करें, राइट? और आपको पता है एक करेक्ट आंसर का आपको 1 पॉइंट मिलता है। ऑल यू वांट आर आंसर्स। यू आर नॉट एमिंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपको डिसाइड करना है कि किस टाइप के, व्हाट टाइप ऑफ आंसर यू आर लुकिंग फॉर, एंड देन यू विल लिसन फॉर दैट आंसर सिंपली, right? And then there will be a lot of extra information given in the recordings. All you need to is just relax and focus on the answers that you are looking for. अब कोई आपसे बोले अरे मैं तुम्हें गुरप्रीत सर का एड्रेस बताऊं, तो आप बोलोगे हाँ मैं कान खोल के सुन रहा हूँ, प्लीज बताओ मुझे। सो सबसे पहले वो बोलेगा
गुरप्रीत सर पहले यहाँ रहते थे, देन ही मूव्ड ऑन टू दिस प्लेस एंड एट प्रेजेंट ही इज लिविंग हियर। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछे कि गुरप्रीत सर का प्रेजेंट एड्रेस क्या है, सो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को निग्लेक्ट करेंगे। सो यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन हियरिंग। हाँ जी गुरविंदर, इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर देखो, देर आर टू थिंग्स, आप कुछ भी कर सकते हो। व्हाट आई सजेस्ट इज कि जब आप समझ ही नहीं पाओगे ना, जब आपको सिनोनिम्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि सिनोनिम का भी वही मीनिंग था जो स्पीकर ने बोला, सो अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। और जब आप एलिमिनेट करते हो ऑप्शंस को, यू नीड टू सी कि इन चारों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो आगे चले। यस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर कई बार होता है कि आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं ऑडियो में, स्पेशली पार्ट 4 और पार्ट 3 में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके लिए कोई शॉर्टकट तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी जगह मैं लिसनिंग का टेस्ट देने जाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। या इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूं, इट्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ आपकी कोई शॉर्टकट टिप्स या ट्रिक्स नहीं होते, इट्स ऑल योर लिसनिंग एबिलिटी। हाउ वेल कैन यू लिसन फॉर दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू लिसन, राइट। अब आंसर्स जल्दी जल्दी आते हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं आते, राइट। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हर 5 सेकंड के बाद ऑडियो में आंसर मिल रहा है। डज दैट हैपन? क्या हम फिर अपनी पेस उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं? हाँ, कि हाँ हर 5 सेकंड के बाद आंसर आएगा? नो, आंसर्स डोंट कम एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट। अब हो सकता है एक ही बार में 3 आंसर्स आ जाएं, दैट्स पॉसिबल नाउ, या that's also a probability. You could suddenly get 3 answers coming together. So this means you have to be good at multitasking. You have to be good at multitasking. Multitasking का मतलब क्या? You need to keep your eye on the next question also. Right? Exactly. Don't just look at the question that you're looking for. Keep your eye on the other questions. Be greedy so that you can move quickly to the next question and you don't lose time. अगर यहाँ तक clear है, give me a high five or just say yes. Then we'll move on. I don't want to give you a very boring session. Quickly, everybody. मेरी प्लस क्लास भी आप लोग के साथ जस्ट आफ्टर दिस है ना, 8 बजे आ जाना ध्यान से, याद से। ओके, चलो ओके। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है? सेकंड प्रॉब्लम आती है सर, क्योंकि आंसर्स जल्दी जल्दी आते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम कंप्लीट आंसर लिख पाए क्वेश्चन पेपर के ऊपर। एग्री? सर कई बार क्या होता है ना, आंसर्स इतनी जल्दी आते हैं कि हम पूरा का पूरा आंसर लॉन्ग वर्ड नहीं लिख पाते क्वेश्चन पेपर के ऊपर, राइट। अब अगर आपको कोई बोले, एक मिनट दो, गुरप्रीत और जीपी में क्या फर्क है? तो यस, तो अगर मैं जीपी लिख दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर मेरा आंसर जापानीज रेस्टोरेंट है तो अगर मैं सिर्फ जापरेस लिख दूं तो भी चलेगा? है ना?
That's also possible. All we want is to save our time so that we can answer and keep an eye on the next questions also. और जब आप ट्रांसफर करोगे आंसर्स देन यू कैन राइट द फुल वर्ड, है ना? और आप क्वेश्चन पेपर पे तो लिख ही सकते हो बिकॉज एनी हाउ द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू सी और हैव अ लुक एट योर क्वेश्चन पेपर, राइट? एग्जैक्टली। चलो ओके, अब आते हैं कॉमन ट्रैप्स के ऊपर। चले ओके। अब बहुत सारे तरीके हैं जो आईएलटीएस आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज करती है, और मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है कि दे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड दे टेस्ट योर वोकैबुलरी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीकर ए ने बोला शैल वी मीट एट 5 o'clock, स्पीकर बी ने बोला यस डेफिनेटली लेट्स मीट एट 5, सो वी हैव गॉट द आंसर 5 o'clock, बट देन आगे क्या होगा देखते जाओ। Oh, actually, sorry, how about 7:30? So suddenly, instead of the answer being 5, what is the answer now? What is the answer now? Everybody, can you tell me? When are they meeting? At what time have they planned to meet? Everybody, come on. Yes, the answer is gonna be 7:30, right? Okay. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि the moment we hear the answer उसको final answer नहीं मानना है, right? Everybody, have you understood that? When you listen and you hear your answer, obviously you can make a note of the answer. अब आपने सुना आंसर 5 o'clock, लिख लो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, बट जैसे स्पीकर आंसर चेंज करता है स्क्रैप इट ऑफ। तो इसको मैं बोलता हूं राइट एंड स्क्रैप स्ट्रैटेजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट नो पॉइंट यू शुड बी वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर। समझ में आया एवरीबडी? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सुन रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब सही आंसर आएगा और हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखेंगे। नो, कीप लिसनिंग, और जो पहले डिस्ट्रैक्टर आया उसको भी नोट करो। कीप लिसनिंग बिकॉज आंसर हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है? सो आपको वो भी लिखना है। यू कैन राइट इट ऑन द क्वेश्चन पेपर देन यू कैन स्क्रैप इट, सिंपल। सो राइट एंड स्क्रैप स्ट्रैटेजी क्लियर है एवरीबडी? Right and scrap strategy. Is it clear everybody? ठीक है। Another type of trap is जब आपको सेम वर्ड्स क्वेश्चन में भी दिखाई देते हैं और सेम वर्ड्स रिकॉर्डिंग में भी होते हैं, और लोगों को लगता है, या बच्चों को लगता है ओह ये मेरा आंसर है, बट एक्चुअली अगर ये इतना इजी होता तो लोग तो बैंड 9 ले लेके पागल हो चुके होते। If this had been so easy, then people would have scored a band 9 in the very first go. So actually this is a dash. Actually this is a dash. Because IELTS will use paraphrasing rather than using the exact same words completely. So जब भी आपके पास आंसर अपने आप आएगा ना कूद कूद के कि हे मुझे चूज करो, उसके ऊपर आपको डाउट होना चाहिए, ठीक है? एग्जैक्टली, डन, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि जब पार्ट 3 में इतने सारे स्पीकर्स होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्पीकर। अब लेट्स से आपके पास 4 स्पीकर्स हैं, जैक, रोज, किको एंड मारिया। होता है ना ऐसे, क्वेश्चंस दिए होते हैं
21, 22, 23 और 24 और पूछा होता है कि ये क्या बिलीव करते हैं अबाउट द टॉपिक। अब उसके लिए आपको स्पीकर्स में भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, हैपेंस, है ना। तो अब देखो, अगर आपके पास मल्टीपल स्पीकर्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी वॉइसेस डिफरेंट होंगी, राइट, उनके जेंडर्स, यस। और ये कंफ्यूजन बेसिकली तब होती है जब स्पीकर्स के जेंडर्स सेम होते हैं, तब थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, राइट। बट कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आप स्पीकर्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो बिफोर यू लिसन आप लोग क्या कर सकते हो, उनके नाम आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्वेश्चंस में कीवर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हो, और उनकी कॉन्वर्जेशन का क्या टॉपिक होने वाला है यू कैन प्रिडिक्ट दैट। सो जब आप सुन रहे होगे तो उनके नाम के लिए आप बहुत केयरफुली सुनेंगे, उनकी वॉइसेस में डिफरेंस देखेंगे, राइट। अब क्वेश्चन आएगा सर वॉइसेस में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ऑब्वियसली उनकी टोन अलग होगी, नॉट एवरीबडी स्पीक्स विद द सेम टोन, कईयों की टोन वॉइस की बहुत हाई होती है, कुछ की बहुत लो होती है, टोन वेरीज। सेकंड, वॉल्यूम, वो कितना लाउडली या कितना सॉफ्टली बोलते हैं, एक्सेंट, कौन सा स्पीकर है जो नेटिव स्पीकर है, कौन सा नॉन नेटिव है। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू कैन यूज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दोज वॉइसेस। क्लियर है एवरीबडी, जब आपको पार्ट 3 में मल्टीपल स्पीकर्स के साथ डील करना होता है। डन, लेट मी नो क्विकली। तो वेट मत करो, अगर एक आंसर छूट गया ना प्रभजोत, लेट इट बी, तो उसकी वजह से आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। होता क्या है कि हम वेट करते रह जाते हैं कि ओ शेट मेरा एक मिस हो गया, आगे चलो, डोंट वेट फॉर दैट, क्योंकि अगर वेट करते रहोगे यू विल एंड अप मेसिंग अप विद द एंटायर सेक्शन, ठीक है। ओके, अब एक एक्सरसाइज करें एवरीबडी, इफ यू पीपल आर रेडी, और मुझे बता देना इफ दिस इज विजिबल टू यू। करें स्टार्ट, क्वेश्चन विजिबल है, ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट एवरीबडी, गुड लक। You will hear a student called Wei Liu talking to a restaurant manager about a part-time job. First, you have some time to look at questions 1 to 5. ओके एवरीबॉडी, तो ये स्टूडेंट किसके साथ कॉन्वर्सेशन करने वाला है पार्ट टाइम जॉब के लिए? एक तो स्टूडेंट है, हु इज द सेकंड पर्सन इन द कॉन्वर्सेशन? Yes, restaurant manager. All right. Questions पढ़ लो because the audio can start anytime. Hello, jobs for you. How can I help you? Yes, I'm looking for some part-time work. Something in a restaurant, maybe. Are you a student? Yes, I'm in my second year at college, so I'm only available in the evenings and at weekends at the moment. Okay, let's have a look at what we've got. Right, well, there's a position as a kitchen assistant available. It's at the Carousel Cafe down on Swan Street. Sorry, could you spell the name? Yes, it's C-A-R-O-U-S-E-L. Thanks. So, when would I have to work? Well, it says here
that they need staff for Saturday and Sunday, so that would be okay for you, wouldn't it? Yes, it would. I guess the job involves washing the dishes. That's right. It says here they have a dishwasher though, so you'd load the dishes and take them out. Oh, but before you do that, you first have to clear the tables in the cafe and take the dishes into the kitchen for washing. Fine. Is there anything else? Bellamy's restaurant is looking for waiting staff. That's not for the weekends though. That would be 2 evenings a week, Thursday and Friday. You do the things normally associated with that kind of job, taking orders and serving the food. There are also some cleaning duties too. That sounds reasonable. The final job we've got that might suit you is for a barista. What? A barista, you know, someone who serves coffee. This job is at a department store all day on a Saturday. Oh, in Tanner's. No, well, yes. Tanner's has a new owner, and so the name recently changed to Millaby's. It's spelt MILLERBY''S. Great, thanks. What would I have to do there? You'd need to make and serve hot drinks. They also sell cakes there, so you'd need to bake them first thing in the morning. They're pre-prepared, so you wouldn't need to be an expert. Just put them into the oven. Alright, so किसको सारे आंसर्स मिले? How many of you were able to figure out all the answers? और क्या ये easy था, difficult था, intermediate था? What do you think, guys? Everybody? What do you think? How many of you were able to figure out all the answers? Because I was also doing it simultaneously. Very good, very nice, very nice. Yeah, so the first answer is CAROUSEL. That's what I heard. Second answer is wash dishes, clean tables. Why? Because you have to attain parallelism here. A wash dishes hai, so you need to have the same format. Clean tables. So that's the second answer. Third answer is waiting staff. Right? The fourth answer is Millaby's. MILLERBY''S. And the last is bake cakes. So what was your score out of 5, everybody? How many did you get right? Everyone. Quickly, everyone. Quickly, quickly. कोई बात नहीं प्रभजोत. मजा आया? Enjoy it? Very nice, very nice. आगे चले. इसके बाद प्लस क्लास भी है, उसमें भी आ जाना. ओके, चलो आगे चलते हैं. You will hear it. ओके, अब ये दिख रहा है. These are short answer questions. Now read questions 6 to 10.
Now, the summer holidays are coming up, and there are some temporary jobs available at a local ice cream factory. Would you be interested in those? Oh, yes, definitely. I don't have any plans. What kind of jobs? Well, they're full-time jobs, Monday to Friday, but they're also temporary, for about 6 weeks. The first position is an unusual one. It's for a food taster. That's the person who checks that the ice cream has been produced correctly by the machines. It's a quality control job, really. The salary's good for this kind of job at £15.30, but you'd need to take a test to make sure you have good tasting skills. That sounds really interesting. I'm definitely interested in that one. One of the best things about that job, I think, is the fact you can get involved in their creation program. That's where staff experiment with different flavors to create new ice cream recipes. Wouldn't it be great if you could create a new ice cream flavor? Yes, absolutely. The second job they're offering is food packer, where you have to put packets of biscuits into boxes and then label each one. You need to be conscientious to do this kind of job. It pays £8.45 an hour, which is obviously less. I guess ये audio different है. No, I guess this is not the audio that we actually need to have for this. Now, है ना? I thought, मतलब I was like कि मुझे 6th का आंसर तो मिला ही नहीं है. Was it only me, or did you also spot the answer? Because मुझे तो नहीं मिला. Okay, चलो ये वाला कर लेते हैं. Not an issue. Let's do this one. ये वाला कर लेते हैं. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a woman talking to a friend whose town she is planning to visit. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Okay. Look at questions 1 to 6. You will see that an example has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? hello, Bill. It's Lucy. Lucy, how are you? Everything all right with your travel plans? Yes, absolutely. But I ought to book a hotel, so I need your advice on a good place to stay. Okay. Well, the nearest hotel to us is the Ambassador. That sounds rather grand. Well, it is rather, and it's right next to the sea. The hotel is next to the sea, so sea has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello? Hello, Bill. It's Lucy. Lucy, how are you? Everything all right with your travel plans? Yes, absolutely. But I ought to book a hotel, so I need your advice on a good place to stay. Okay.
Well, the nearest hotel to us is the Ambassador. That sounds rather grand. Well, it is rather, and it's right next to the sea. That certainly sounds nice. It's got a pretty good reputation, though I've heard the service isn't as brilliant as it used to be. The main attraction is the wonderful views. I can imagine, but I'm not sure we'll have much time to enjoy them with all you've got planned for our visit. Well, that's true, and it's expensive, even off-season. And I've heard they charge even more at weekends. Right. Well, maybe we should go for something a bit cheaper. There's the Oaklands guest house. Some friends of ours stayed there last year and thought it was quite good. Where's that? It's actually in the city centre, but that's only 10 minutes away by car. Our friends say they give you enormous breakfasts, but the restaurant isn't open for other meals, I'm afraid. That's not a problem for us. We like to get out to eat. Are the room rates reasonable? Oh, yes, but I should mention that it's on the main road, so it can get rather noisy in some of the rooms. And it's pretty old-fashioned, though I think that's part of its charm. Okay, but I've just thought, if it's not particularly modern, are there a lot of stairs? It might be a problem for Dad. Yes, I'm afraid there are. That won't be suitable then. I think you're right. Oh, I almost forgot. There's a new so-called boutique hotel just opened about 5 minutes walk from us. It's called the Blue House. It's just on the opposite side of the street from the sports centre. I remember driving past it, yeah. I've heard the decor's amazing. It was designed by a local artist. That'd be interesting for Jess, because she's just starting art college. Yes, of course. So, do you think this Blue House might be the best option? Well, just recently the local newspaper gave it a glowing review, saying it was really good value for money. Although it did say you have to pay for parking in addition to the room rate. It's not much, but I thought that was a bit mean. Tell you what, I'll discuss all this with Alex and make a decision soon. Fine. Right. So I've given you the answers. Ab batao, do you agree with my answers or have you got anything different? Quickly. So have you got something different from those of mine? Or are they the same? Okay, that's nice, that's nice. Everybody, cool, cool, cool. All same, fantastic, fantastic. Maza aaya? So actually I wanted you to do this also. करना है, चलो ये भी कर ही लेते हैं. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to... एक मिनट, let me see. You will hear... चलो ये भी कर ही लेते हैं. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. करोगे? Are you going to try? One word बोला है, quickly. Now listen carefully and answer the questions 7 to 10. In the meantime, we'd like to bring presents for you and the kids. What would they like? That's ever so good of you, thank you. We always love getting your gifts. Our pleasure. So, starting with Daniel, is he still skateboarding? Well, actually, he hasn't done that for a while now. He's really into sailing, so he'd love anything to do with that. Right, I've noted that. And last time we bought a small box of chocolates, which he really enjoyed. He loved them, but it'd be rather cruel because he's on a diet at the moment. So it's best not to bring any. Yes, best avoid it. No problem. I've got a good idea for Alice. Great.
You know she's off travelling soon. Of course, I saw her Facebook posting. I could get her a travel guide, couldn't I? She's already got one on Portugal. How about Spain? Excellent. She'd love that. So that just leaves you, Bill. Well, you know how much I loved the sweater you bought me last time. Yeah, you wore it a lot. I'll get you another one. Well, I prefer a shirt, you know, like John's, if that's all right. You mean with the batik design? I love those traditional prints, yeah. No problem. We'll get organised now. The sweater you bought me oh, quiet at the moment. So it's best not to bring any. Yes, best avoid it. No problem. I've got a good idea for Alice. Great. You know she's off travelling soon. Of course, I saw her Facebook posting. I could get her a travel guide, couldn't I? She's already got one on Portugal. How about Spain? Excellent. She'd love that. So that just leaves you, Bill. Well, you know how much I loved the sweater you bought me. Okay, done, everybody. You know, my concentration broke at question number 9. So she already has one on Portugal, but what about Spain? Right? So the answers are sailing, chocolates, Spain and shirt. That's what my prediction says. Right? Okay. Done. Everybody. So if you enjoyed this session thoroughly with me, do let me know in the comments below. And we are meeting again at 8 o'clock for the plus class. Everybody. Yeah, exactly. So yes, Unacademy offers you, correct. So if you want to learn more, get Unacademy subscription using the code Gurpreet10, and I'll be there to guide you people. And you can opt for iconic subscription, plus subscription, depending on how much time you have and what is your target band score requirement. So accordingly you can opt. You have the opportunity to talk to your educators, and you can go for 1 month, 2 months or 3 months. जब आप ये code लगाएंगे Gurpreet10, you're going to get a discount also, right? Any doubt? Anybody? कोई doubt है? So अभी हम plus class में आ रहे हैं. Class, everybody knows we are meeting in the plus class. No problem everybody, no problem. कोई question, कोई doubt जो आप लोगों के मन में है and you people want to ask, you are most welcome. 8 o'clock अभी plus class का time हो गया. Yes, अभी आ रहे हैं इसको ख़त्म करके. Do hit the like button, everybody. Any doubt if you people have in your mind and do you people want to ask me, you can go ahead. So I'll meet you guys in the plus class then, everybody. Don't forget to hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel. Press the bell icon so that you stay updated whenever I have a class with you. Cool? कोई डाउट नहीं है? Everything clear? या all clear? Clear है या all clear है? या clear है या all clear है? Thank you so much, everybody.
Thank you. So let's call it a day, and I'll see you very, very soon. And plus students, I'll see you in the plus class. All right. Chalo then. Take care, everybody. Adios, gracias. Bye-bye. Take care, and I will see you very, very soon. Okay. Plus class is a structured course. That's for paid subscribers. Alright.